Namaskar. You are watching Dr. KK Med Talks Fridays with Dr. Anita Kant, non-stop 889th show. Let's have the headlines of the day. Asthma is more common in female adults than male adults. Around 9.7% of female adults have asthma compared to 6.2% of male adults. A systematic analysis of the global burden of disease published in the Lancet in 2020 reported that around 262 million people had asthma in 2019 and 455,000 people died from the condition worldwide, with majority of deaths in the low and lower middle income countries. According to the clinical reports, bronchial asthma is considered the most common chronic disease in pregnancy, complicating about 4 to 8% of all pregnancies. University of Alberta researchers uncover concerning trend low and stable asthma medication dispensation despite increased asthma prevalence. New study shows no link between asthma medication used in pregnancy and neuropsychiatric risk in children. Leukotriene receptor antagonists found to be absolutely safe. Now let's go to the topic of the day. So today we will be talking about asthma management during pregnancy. And for this, we have our special guest, Dr. Nitin Abhyankar. नमस्ते मैम आपको और Welcome, दर्शकों Dr. को मेरा Nitin. या थैंक यू डॉक्टर नितिन अभ्यंकर एक सीनियर कंसल्टेंट है, टेस्ट फिजिशियन है, with a distinguished career that spans over 3 decades. He is armed with an impressive academic background, including a ERS diploma in adult respiratory medicine from Berlin. Dr. Abhyankar has been an invaluable force in the field of respiratory medicine. As the hospital consultant and head of the department chest medicine at Pune Hospital, Pune, he continues to elevate patient care to new heights. With over 12 years of teaching experience and an impressive portfolio of 15 plus articles in prestigious national and international journals, Dr. Abhyankar embarked on his professional journey, making a significant impact in the lives of countless individuals. And आज ये हमारे साथ हैं बात करने के लिए कि एस्थमा इन प्रेगनेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसके दवा लेने से डरना नहीं चाहिए. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इज इट सेफ कि हम एस्थमा की दवाई दें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? उल्टा I think the first and the foremost rule of asthma and pregnancy when it go together is that बहुत सारी बार ये वहम होता है कि जनरली मुझे हेडेक है, मैं हेडेक की गोली ना लूँ तो मेरा बच्चा बच जाएगा या बेहतर रहेगा. यहाँ उल्टी रूल गंगा उल्टी बहती है कि अगर मैं दवा ना लूँ तो बच्चे को ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर मदर को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ठीक तरह से या सांस अच्छी नहीं आ रही है तो बच्चे को आने के चांस ही नहीं है. सो काउंटलेस पेपर्स हैव शोन दिस दैट एस्थमा मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी है एंड इट शुड बी टेकन in the same pattern like in a non-pregnant women, and inhalers as well as Montelukast, as well as even if it comes to oral steroids, if it is genuinely needed in a severe asthma, of course there'll be more caution and more risk of complications. But even then, the thumb rule is that controlling asthma well is the first priority, because keep the mother normal in the terms of airway, the child will get adequate oxygenation, and the risk is of so-called risk of congenital malformations and so on and so forth is so minimal comparatively that most of the asthma medications up to as you very rightly said, up to Montelukast, they have been cleared. So inhaled corticosteroids, LABA, everything else is reasonably good, no problem. You can use it. SABA can be used. Ipratropium can be used. You don't want to generally use tiotropium, but most of the medications are safe. And I think the biggest thing that we have to fight is the डर phobia in the mind of the patient, कि वो उसको जो डर लगते रहता है कि मैं ये इनहेलर लूंगी तो कुछ तो मेरे बच्चे को हो जाएगा.
उल्टा है, मैं ये इनहेलर ना लूंगी तो बच्चे को कुछ ज्यादा होने की रिस्क है। सो आपका ओपिनियन क्या है कि एस्मा वर्सन होता है या इम्प्रूव हो जाता है प्रेगनेंसी में? I think it's one third, one third, one third. The rule is one third, one third, one ओके, third. It will be worse in some patients. It will be better in some patients. It will be stable or static in some patients. So it is not. You really don't know which way it will go. So best is to be prepared for the worst and hope for the best. And therefore, you are whatever. Suppose if you are controlled with say formoterol budesonide, 200, two puffs twice daily for last 3 years, and you become pregnant, don't change it unless until either your symptoms, lung function, peak flow, anything else is telling you that something needs to be changed, and don't change it unless or stop it unless you discuss properly with the doctor. There has to be a genuine reason. In fact, the commonest thing which most of the I wouldn't say gynecologists, but most of the doctors who are not trained in this. Gynecologists today are very well trained in this. I think because they, with the CMAs, एग्री। everybody knows. But general doctors often, I have seen sometimes even, though I have nothing against eye doctors, but I have seen them, scare people out of their inhalers, saying that they are steroids and they will harm your eyes. So that kind of a thing. I don't think the gynecologists say that kind of stuff, but there is a chance that somebody may pass a remark saying that there is steroid in this and the steroid does harm, and the steroid phobia is the main thing which you have to be just be wary of, that it should not be, the doctor should never introduce that in the mind of the patient. That is the most important thing. And they need a little bit of reassurance, and the data is there to back it up, so there is no problem really. एक्चुअली हियर आईड लाइक टू पुट इन अ थिंग। कोविड में Yeah, क्या हुआ था कि बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन हुआ और कहीं correct, पर कोविड में दिए जाने वाले स्टीरॉइड्स को कहीं कहीं पे ब्लेम कर correct, दिया गया। तो correct. इसलिए लोगों को स्टीरॉइड से अब ज्यादा डर लगने लग पड़ा है। ज्यादा डर लगता है, ऑल्दो yeah. स्टीरॉइड इज लाइफ सेविंग ड्रग इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। सो 100%. I think I was the first person to get COVID in my hospital. I ओ have माय fought it गॉड, out with मस्ट बी। steroids. Absolutely. And I was in charge of 180 COVID patients, because मस्ट बी। respiratory were leading that front at that time, यस and there was nobody यस else. So, यस। so we have seen लिटरली countless हैट्स ऑफ टू यू lives, गाइस। काउंटलेस लाइव्स बच गए हैं बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड. सो आई थिंक स्टीरॉइड यस। फोबिया तो छोड़ो हुआ है. आई हैव बिकम स्टीरॉइड फिलिक पेशेंट, आई मीन पर्सन डॉक्टर, over a period Yes, of the last yes, 3 years, rather than yes. and you know how limited use of antivirals even in COVID scenario. So I think Hmm. we should not be running away from the truth that when used correctly, I'm not saying injudicious, uncontrolled, people giving 1 gram methylprednisolone are not right, but at the same time, a judicious use of inhaled steroids in asthma, absolutely on, no question, no hesitation. एंड ऑल्सो इनहेल्ड तो जाके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही कम वैल्यू में बहुत ही पहुंचते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल बेसिकली इट इज लाइंग अप्लाइंग बीटाडीन ऑन अ कट एंड इंस्टेड ऑफ टोटली. टेकिंग एंटीबायोटिक्स, दैट इज द डिफरेंस। मैम मैं एक एग्जांपल दूं तो वो हाँ जी, पेशेंट्स हाँ को जी, कन्विंसिंग के लिए अच्छा होता है. मैं आई हाँ ऑलवेज जी, हाँ टेल जी। देम, आई सेड डू यू ड्रिंक अ पेप्सी और अ कोका कोला और समथिंग लाइक दैट. आई सेड हाँ वो करते हैं ना. तो मैं उसमें पेस्टिसाइड नहीं होता है क्या? बोला हाँ होता है ना हाँ सर. बिल्कुल। कितनी मात्रा में होता है? हाँ। बहुत अति सूक्ष्म मात्रा में होता है. मैं बोला वही वही सूक्ष्म मात्रा ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ब्लड में जाके बन सकती है, क्योंकि पहले ही वो अति सूक्ष्म मात्रा में है. 50% वैसे भी हवा में जाने वाला है. पहले भी हेपेटिक पास मेटाबॉलिज्म 20% और 80% इट उसमें निकल जाएगा. सो मैं 400 माइक्रोग्राम अंदर डालूं तो उसमें से 200 माइक्रोग्राम जाएगा एयरवे में. उसमें से 80% will be gone, so 0.8 microgram is left. 0.8 microgram in 5 liters of blood, उसका लेवल ये पेस्टिसाइड के लेवल से भी कम होता है जो कम हो जाएगा। कोका कोला बॉटल में ऑफिशियली हमें मिलता है, कोका कोला. बिल्कुल So सही I बताया think आपने। so our worries are totally untrue in that sense. Yeah. Unbiased, yes, yes, Yeah. unbased. So, are there any specific asthma triggers to avoid during pregnancy? आई थिंक इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, particularly if you know कि आपके घर में बेड माइट्स हैं या कॉकरोचेस हैं या समथिंग which are indoor pollution, because often we know that, I mean, nowadays the women are working till the very last day and they're going out also, so even the outdoor pollution, air antigens are also important.
if you know what you are sensitive to, we can take care of it, the environmental control. और जहाँ तक हो सके, जैसे cobwebs ठीक करना, या timely, preferably a herbal based kind of ये करके लेना before, and if you are in case if you are sort of doing some serious painting or something furniture work, please avoid it during pregnancy. उस समय मत करिए, क्योंकि उसमें से नए फ्यूम्स, नए टाइप के इनहेल्ड केमिकल्स अंदर जाने की संभावना होती है। सो वो दोनों, दो तीन चीज हम अवॉइड करें तो अच्छा है। इस तरह से अगर मैनेज करें, और ज्यादातर लोगों को पता होता है कि इफ दे हैव एन एलर्जी, बट आई मीन जिनको स्पेसिफिक फूड एलर्जी होता है, फूड एलर्जी बहुत रेयर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देयर शुड नॉट बी अ बेसिक फूड वैम प्रोसेस ट्रेन ऑफ फूड थॉट्स। आई थिंक बेस्ट अवॉइड दैट। सब खाओ, नॉर्मल खाओ, तंदुरुस्त रहो, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द ट्रूथ। But if you have a known allergy, for example, I am horrible allergic to pineapple, I have near death situations with pineapple before, then it is sensible to avoid it. But that is common sense. वो कोई पागल भी नहीं करेगा कि अगर उसको सच्ची में पाइनएप्पल या एग के एलर्जी है तो वो उस समय खाएगा नहीं। नहीं बट खाएगा। दैट इज अ कॉमन सेंस थिंग, एंड दैट वुड बी नोन टू यू। Don't be afraid of unknown allergens which have never given you trouble. So फूड में तो मत सोचो, हवा में जरूर सोचो। हवा में दिखने वाले एलर्जेंस ज्यादातर नहीं है, जो है वो सब अदृश्य हैं, एंड you are going to inhale them in any case. So if you inhale them, best is to stay with your actual proper inhalation therapy. Even if you're on a nasal spray, take the nasal spray. Avoid taking tablets as far as possible, because tablets go into your circulation, 100% absorption, and then there will be some amount of side effect issues. But I think avoiding contact with the allergens is one trigger, and not giving up on therapy is very important. I think that is also equally important. I would say balance these two and you are through. So, can asthma affect the baby's health during pregnancy? Yes, particularly, in fact, it has been shown that a poorly controlled, जहाँ तक poorly controlled अस्थमा का सवाल है, बेबीज अंडरवेट होती हैं, मैच्योर हो सकती हैं, वो डिलीवरी, आई थिंक यू नो बेटर देन मी कि क्या क्या होता है वो जेस्टेशनल वेट कितना, किसका, आई मीन टर्म में वेट कितना, 200 2500 से कम होने के चांसेस हो सकते हैं। सो मेनी ऑफ दोज इश्यूज बेसिकली, एंड so I think most of the intrauterine growth and overall health of the child is affected by a poorly controlled asthma than the medications of asthma. So ये दोनों में से अगर आपको, और ऐसा नहीं है कि लेसर एविल है, बहुत ही अनकंपेरेबल है ये दो सिनेरियोस। अस्थमा की ट्रीटमेंट ज्यादातर इनहेलर से होती है, एलर्जिक राइनाइटिस है तो नेजल स्प्रे से होती है ज्यादातर, और ज्यादा से ज्यादा मॉन्टेलुकास यूज करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। टैबलेट स्टेरॉइड्स तो रेगुलर कोई यूज नहीं करेगा। अगर अस्थमा इमरजेंसी अटैक है तो टेक 4 दिन 5 दिन। सो इट इज नॉट रियली गोइंग टू cause problems. And so I think that is very important to understand that asthma per se is a bigger risk, uncontrolled asthma, than medicines. I think I'm sorry if I'm repeating the same again and again, No, but no, ठीक I है, think it is because worth driving that यस, message. बिकॉज रिपीट करने से वो मैसेज माइंड में हिट करेगा और ज़्यादा समझ हिट करे। में आएगा। सो जी बिल्कुल। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। एक किसी ने से पूछा है ये क्वेश्चन। सो ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एस्थमा के लिए ली जा सकती हैं। अब किसी ने पूछा है कि आर देयर एनी नेचुरल रेमेडीज और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर एस्थमा मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Very frankly, no, no known ones. I mean, well, I mean, if I have to stretch my imagination, there are some supportive measures. For example, आप मदर को either sitting या right lateral या left lateral में सोने बोले, या sitting में थोड़ा सा recline करें, that might help because it will, gravid uterus बड़ी हो जाती है जैसे भी, तो ऊपर पुश करने लगती है तो थोड़ा ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्टी हो जाती है। तो दैट इज अ नेचुरल, if you want to call it natural, very frankly it is a common sense things again basically. बहुत कम ऐसी कोई दवाइयां हैं जो नेचर में से आती हैं जो एकदम से ये करती हैं। If at all you really put a bullet to my I mean gun to my head, I might say think of tea rather than coffee, because in any case tea has mild bronchodilators, and that again I'm not calling this natural, but this is our day-to-day life scenario. So I think that is again worth considering. So there are some few here and there things, very frankly there are not much there
uh, in the terms of so-called naturopathic kind of therapies, which are really, really positively helpful. I would say just stay with the modern medicine and simple basic inhaler stuff, which is like an homeopathic or Ayurvedic medicine, because it is as safe or even more safer, because there are more studies, more organized studies with the conventional inhalers and nasal sprays. सो अब एक और ने पूछा है कि कैन आई कंटिन्यू यूजिंग माय इन्हेलर और अदर अस्थमा मेडिकेशंस व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग? Yes, perfectly. In fact, during asthma, during pregnancy, and during breastfeeding, practically everything. In fact, if at all you have to really worry about, is maybe the बहुत सारा अगर कोई nebulizer ले रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में palate closure के पहले, so up to no 20 whatever 12 weeks. So before 12 weeks you have to be a little cautious with too much nebulization of short acting beta 2 agonist. Otherwise, आप अगर वेल कंट्रोल्ड हो तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड थ्रू आउट द ब्रेस्ट फीडिंग आप अस्थमा का मेडिसिन बिंदास कंटिन्यू करिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, आपको या आपको बच्चे को। मोर इम्पोर्टेंटली यू विल बी मोर कंसर्न अबाउट द बच्चे। कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं टू हेल्प मैनेज अस्थमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Not related to pregnancy, but in general, when you are breathing in asthma, we always train our patients to do what is called as first sleep breathing. So ये बंद करके उसके अगेंस्ट थोड़ा सा पीप लाइक इफेक्ट ये करना, और यू कैन इन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट आवर बेसिक एंशियंट थिंग्स को। हम योगा प्राणायाम में तो जरूर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को आता भी है, तो आप वो प्राणायाम टेक्निक्स कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। But doing too much of it, I mean, Pati Sarvatra Varjayat. I mean, so you don't do it 8 hours a day or something like that. There should be a finite amount. Yeah. और कोई आप ऐसी चीजें बता सकती हो जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन प्रिवेंट एस्थमा अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए कर सके, जैसे लाइक स्ट्रेस अवॉइड करना या कुछ और ऐसी चीज? Yeah. I पॉल्यूटेंट्स तो think, आपने बताए ही। yeah, I think keeping a very positive attitude about pregnancy is one important thing. दूसरा, नॉट कीपिंग फोबिया अबाउट द मेडिसिन। हम जो यूज कर रहे हैं उनके लिए डर मत रखें, आप डॉक्टर से बात कर ले खुली तरह से। और जनरली डोंट डोंट टॉक टू अ डॉक्टर हु इज इल इन्फॉर्म्ड, यू शुड गो टू अ स्पेशलिस्ट हुएवर यू नो ही इज द अथॉरिटी इन दैट ये, और उसको पता होता है कि उसने बहुत सारी ट्रायल्स पढ़ी हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से समझा देगा कि इनहेलर से डरने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद, बिकॉज ये काउंसलिंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये 2-3 बार करना पड़ता है बहुत सारी बार, यू नो लेडीज वंस दे बिकम प्रेग्नेंट दे बिकम वेरी वेरी केयरिंग ऑटोमेटिकली, वो तो होता है, दिस इज द टिपिकल मदरली एटीट्यूड, एंड देन दिस दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड। सो उसमें वो जो इमोशनल कनेक्ट जो बच्चों के साथ बन जाता है, उसमें कुछ भी करने को तैयार होती है लेडी, और वो कुछ भी करने में वो बहुत सारी बार हार्म कर सकती है खुद को इफ शी इज इल इन्फॉर्म्ड। और वो इल इन्फॉर्म्ड कैसे जाएगा, तो काउंसलिंग से जाएगा, काउंसलिंग टेकन फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेल इन्फॉर्म्ड। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन कैन डू, कि अगर हम वो करें, और ऑफ कोर्स आई मीन जस्ट मेंटेन नॉर्मल एक्सरसाइज, यू डू नॉट हैव टू सिट इन वन प्लेस। वो बहुत सारी विश्रांति की बहुत जरूरत नहीं रहती है, बहुत सारा वक्त तक हम एंड तक काम कर सकते हैं। इंडोर क्लोज करें तो इंडोर एयर पोल्यूशन है, बाहर जाए तो बाहर के पोल्यूशन है या पोलन्स है, कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट तो आ जाएगा, जिस चीज को आप एलर्जिक हो थोड़ा ना कांटेक्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स आई थिंक लास्ट 3 years people have learned the trick of using a mask, and today it will not be bad to say, if you are really scared of this, wear an N95, wear a headgear, and go on a two-wheeler. You are safer. Even that is true for यस, asthma, यस, because your यस। exposure to allergens is minimized automatically. So of course, it may not be every day possible, but whenever you are going into a crowded place, wear mask without being worried. So wearing mask is one of the positive things in today's scenario. I just went to Indore and picked up a viral, and I'm back, and I'm just recovering out of it. So I mean, and I was not wearing a mask. So I think, यस। yeah, it's the simplest of the things, because वो जैसे बोला रात गई बात गई, तो people have forgotten कि अब ये कोविड नाम का कोई एकदम डिजास्टर था,
और अभी हम्म, यस, अभी इट इज बैक, इट्स इन डिफरेंट फॉर्म। मुझे मोस्टली इन्फ्लुएंजा बी हो गया रहेगा, या इन्फ्लुएंजा ए H1N1 हो गया रहेगा, वट एवर इट इज, बट आई गॉट इट हम्म, रिसेंट। So, अगर if you are caught by those, in fact, then the asthma may worsen. So, I think preventing viral infections again is a very important and simple thing which we can do by just isolating 2 to 3 meters from people who are not known. अब घर में हम्म, बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मास्क हम्म, पहन के बाहर चले, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। सो एंजाइटी और स्ट्रेस तो अवॉइड करें और ये छोटे-छोटे टिप्स फॉलो करें। अब जी। एक जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कोई एक जानना चाहती हैं प्रेग्नेंट मदर कि कितनी फ्रीक्वेंटली मुझे अपना चेकअप कराना चाहिए फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आ, एक, अगर आप ठीक से देखें तो स्पेशलिस्ट के पास आपको बहुत बार जाना नहीं है। द हुँ, हुँ, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक, सेकंड ट्राइमेस्टर एक, थर्ड ट्राइमेस्टर के बिगिनिंग में मे बी एक, अगर हो सके तो ये 2 और 3 काउंसलिंग सेशंस आर गुड इनफ। आपका अगर दवाइयाँ पहले से सॉर्टेड आउट है तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट वन वेरी गुड ट्रिक आई टेल यू विच यू कैन डू एट होम, बिकॉज स्पायरोमेट्री करने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। स्पायरोमेट्री हुँ, करने के लिए यू विल बी नीडिंग मशीन्स। हियर यू डोंट नीड मशीन्स, ऑल यू हैव टू डू इज बाय अ पीक फ्लोमीटर। पीक फ्लोमीटर इज जिसमें एक सिंगल फूक मारने से इसे करके जो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ज़ोर से फूँक है वो रिकॉर्ड करे, और वो ब्रीथोमीटर आगे चलता है तो कितना चला समझो, 300 है, 350 है, 400 है, उसकी जो 3 रीडिंग्स लेके बेस्ट रीडिंग लिख के रखें। और बहुत सारी बार वी हैव सीन, वी एब्सोल्युटली सॉ दिस फिनोमिनली वर्किंग इन कोविड टाइम्स बिकॉज़ वी वर नॉट एबल टू डू लंग पंपिंग एंड दैट केम एज़ अ सेवियर टू अस। इट इज़ अ ब्रिलियंट सेवियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो, कि आप पीएफआर करते रहें तो आपको बार-बार ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप अ चार्ट once in a month, just SMS और WhatsApp और email और do something। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। पीपल हैव बीन डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन ड्यूरिंग दिस। सो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर भी सकते हो। और अगर आपको अच्छा, आपके सब चार्ट्स अच्छे हैं, समझो कि पीक फ्लो, मेरा प्रेडिक्टेड पीक फ्लो 500 है, मैं 500 हिट कर रही हूँ। 500 तो नहीं होता है लेडीज का, मे बी अराउंड 300 350। सो 300 350 मैं हिट कर रही हूँ कंटिन्यूअसली एवरी डे, सुबह शाम। And the trick is it should be done before taking the inhalers. Always take the reading before taking the inhalers, and then take the inhalers after that immediately. So it will be a morning reading and another reading से 6 o'clock morning लिया तो 6 या 7 बजे शाम को लेना है। तो ये 2 रीडिंग्स आप करते हैं, we call it AM PM charting. So AM in the morning, PM is evening, and if you do that charting and the chart is looking healthy, your asthma is controlled and you don't need, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता इसके लिए। तो ये बहुत ही सिंपल और सेफ ट्रिक है जो बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते। वेरी फ्रैंकली, आई डू नॉट सी दैट इवन माय कलीग्स आर नॉट एज पैशनेट अबाउट इट, इवन द चेस्ट फिजिशियंस। सो हुँ, फॉरगेट हुँ, अबाउट गायनेकोलॉजिस्ट, बट आई डोंट नो कि कितने लोग थमाते हैं अपने पेशेंट के हाथ में ब्रीदोमीटर या पीक फ्लोमीटर। पीक फ्लोमीटर इज अ वेरी सिंपल थिंग, widely available, one time investment of 500 rupees or whatever that is, and it will last with you for 2 years 3 years आराम से। so ये बहुत जरूर करिएगा। in fact this is the simplest trick which will replace all the consultations which are unnecessary, all the emergencies which are unnecessary, and you will be able to titrate your medicines with the help of your consultant with just 2 or 3 follow-ups during pregnancy, that will be enough। पहली बार और एक कोई बार डाइ हाँ, या पहली बार एक बार बात करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू बी प्राइमरीली गेट रीअश्योर्ड कि मैं यस, मुझे यही यस। दवा कंटिन्यू करना है। हुँ, सेकेंड हुँ, हुँ, ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में एक बार अगर हो सके तो स्पायरोमेट्री करिए, लंग फंक्शन करिए उस समय। और अभी हुँ, हुँ, इम्पल्स ऑसिलोमीटर नाम का नया टेक्निक आया है, वो भी कर सकते हैं, तो हम लोग वो भी करते हैं। नाउ वी डू इम्पल्स ऑल्सो। इम्पल्स डजंट रिक्वायर एनी फोर्सिंग, so even if you are having a bit of a unstable pregnancy, you don't have to worry because impulse oscillometry normal tidal breathing पे होती है, तो वो भी कर हुँ, हुँ, सकते हैं। एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर के बिगिनिंग में अगर हो सके तो इट्स ऑप्शनल, इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। वन मोर रीअश्योरेंस फ्रॉम द डॉक्टर की सब ऑल इज वेल, you can look at your pick flow charts and that's enough। So 2 3 counselings, nothing more than that, and that is what is needed। so बहुत सारा आपको बहुत मॉनिटर नहीं करना है, जरूरत नहीं है। हुँ। बहुत मॉनिटर करना है लेकिन आपको घर में करना है डेली बेसिस पे विद द पीक फ्लो चार्टिंग। और कोई डाइटरी चेंजेस आप रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं ताकि मैडम, अस्थमा मैनेजमेंट ईज़ी रहे?
एक ही करते हैं कि जैसे आई थिंक आप गायनेकोलॉजिस्ट लोग तो सब विटामिन डी पे बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली जाते हो, तो वो सही है इसमें। और विटामिन डी इनफैक्ट आप अगर विटामिन डी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ाओ, हम लोग 600 यूनिट्स का मानते हैं दिन में, तो वो अगर 2000 के ऊपर या 3000 के ऊपर डेली रखें, हाई डोज बोलते हैं इसको, तो अगर हाई डोज विटामिन डी रखें तो आपके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आपके बच्चे में अस्थमा आने के चांसेस भी up to first 3 months or up to the first few years of life it gets reduced. So of course आपको बच्चे के लिए भी विटामिन डी शायद डॉक्टर बाद में प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो इफेक्ट ज़्यादा भी कंटिन्यू हो सकता है आगे चल के। बट विटामिन डी इन हायर देन नॉर्मल डोसेस इज द ओनली फूड, आई मीन फूड नहीं है ये एक्चुअली विटामिन डी है, लेकिन difficult to take it from the food because वो conventional requirement of vitamin D is fulfilled by at least half a liter of milk, और बहुत कम लोग हाफ लीटर पी पाते हैं एक दिन में। सो 2 लीटर 4 लीटर पीना बहुत मुश्किल है, सो इट इज बेटर दैट आई टेक अ सप्लीमेंटेशन एंड दैट इज इजियर। और इजी। सनलाइट में बैठना पड़ेगा विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए, तो 2 घंटा परपेंडिकुलर सनलाइट में बैठना पड़ेगा। ऐसा कौन बैठेगा प्रेगनेंसी में, कौन बैठने देगा? सो आई थिंक वन हैज टू बी रियलिस्टिक that take that, that is one pill I will recommend definitely to most of the ladies. They can happily take it and without much harm, I mean almost zero harm. और कोई एस्थमा मेडिसिन जो हम प्रीनेटल मेडिसिन खिलाते हैं पेशेंट्स को, लाइक Yeah. आयरन एंड कैल्शियम, उसमें इंटरफेयर तो नहीं करती हैं? मोस्टली नॉट, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इनहेलर मेडिसिन से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। आप लेबर इंड्यूस वगैरह जो करते हैं, ऑक्सीटोसिन इज द चॉइस, इट रिमेन्स द चॉइस इन दिस, बट पीजी, बट आई थिंक दैट इज मोर टेक्निकल, इट इज मोर फॉर यू मैडम। वो ये पेशेंट्स के लिए कोई यूज की बात नहीं है कि जनरली आई थिंक इफ यू हैव टू जस्ट से इन वन सेंटेंस, no, they don't really interfere. The conventional wisdom हाँ, stands वो true. एक Let बिल्कुल the gynecologist, प्रोस्टाग्लैंडिन का एक प्रिपरेशन होता है एक जो कि प्रिपरेशन है वो, इंडक्शन के समय हम नहीं देते, वो नहीं एस्थमा देते। का अटैक प्रेसिपिटेट कर करेक्ट देता करेक्ट है। करेक्ट बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल वो सही। छोड़ के बाकी कोई इसलिए प्रॉब्लम। हाँ, मोटा मोटा उनके रिकॉर्ड पे लिखा रहता है कि एस्थमेटिक। एस्थमेटिक सही है, है। सो वो खाली पीजी 2 आपको नहीं देने बस, दैट, बट दैट इज फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट, यस। जनरल पेशेंट्स के लिए। उनको तो पता ही नहीं रहता है वो क्या है। पता ही नहीं। सो एक ने पूछा है कि मैं क्या करूं अगर मुझे अस्थमा का अटैक हो जाए और मैं प्रेग्नेंट हूं? Asthma का attack in pregnancy is managed on very similar lines like in ये इसमें typically of course आप खुद नहीं करेंगी, ये डॉक्टर ड्रिवन होगा। The first thing you should keep on doing is whatever inhaler you have, even if it is say levosalbutamol, for example, I'm just giving you an example, तो वो inhaler every 20 minutes लेते रहें till you reach the doctor. That is the first order of business. That means don't stop taking the bronchodilator till you reach the doctor. Generally the first 2 hours are golden hours, that is like in every asthma attack कि पहले 2 घंटे में आपको मैक्सिमम करना है। जनरली डॉक्टर विल गिव यू अ इंजेक्टेबल स्टीरॉइड, बट इंजेक्टेबल स्टीरॉइड विल नॉट वर्क इमीडिएटली, इट विल टेक 5 से 6 घंटे। So they will often start a nebulizer if that is required, and a nebulizer of either formoterol budesonide or a levosalbutamol ipratropium or salbutamol ipratropium, जो भी है, जो हम प्रॉपर कॉमनली डिओलिन के नाम से पॉपुलर है, या that kind of a nebulization, so can be taken and again can be continued every 20 minutes till either you start becoming better, or and again I think even in this situation peak flow matters, because if you have measured your peak flow and it was 100 a hour ago, and now after 1 hour and 3 doses it is 200, I know you are improving, so then you should not panic. So in that case, take the steroid, whatever it is. If there is antibiotic relevant, there is an infective exacerbation, doctor will prescribe that to you, and then you are on your way. So you don't have to use exotic drugs. बहुत ज़्यादा exotic drugs आपको use करनी नहीं पड़ेंगी. I think so. These 2 3 things is the critical. First order of business, definitely remember, no, take your immediate reliever, whatever is giving you, or even if it is a combination inhaler, formoterol budesonide, even it acts like a reliever. So keep taking 2 puffs every 20 minutes till you reach the doctor. Within 1 hour, try to reach the casualty of the doctor or hospital or whatever, wherever you are registered, and then they will take it from there. That will be easy. Nebulization, injectable steroids, antibiotics if relevant,
and that's it. And oxygen if at all needed, it generally of most of the times if your saturation अगर normal है तो आपको ऑक्सीजन यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. और generally most of the, I mean, pregnancy is a problem of young women. It is not a problem of 70-year-olds. So obviously most of them will be normal oxygenation wise. बहुत कम बार ऑक्सीजन कम पड़ता है, और अगर ऑक्सीजन कम पड़ता है तो जनरली इट्स अ इंडिकेटर दैट अगर ऑक्सीजन 70 है या 80 आया सैचुरेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के कोई बड़ी इमरजेंसी आ रही है. सो डॉक्टर्स विल प्रोबेबली पुट यू इन द आईसीयू जरूरत है तो. सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. यस मैम. अब बहुत अच्छी बात ये आपने बताई, यू नो हाउ टू टैकल एन इमरजेंसी व्हाइल यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक लास्ट क्वेश्चन एक लेडी ने पूछा है कि जी. क्या स्मोकिंग या एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक, यू नो माय या हस्बैंड स्मोक्स और आई एम इन अ प्लेस वेयर अदर पीपल आर स्मोकिंग, क्या वो वर्सन कर सकती है मेरे अस्थमा को? बिल्कुल. अस्थमा कोई नहीं, आपके बच्चे को भी बर्बाद कर सकती है. सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद तो स्मोक ना ही करें, लेकिन इंडिया में वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. वेरी वेरी नहीं। फ्यू स्मॉल परसेंटेज ऑफ वीमेन स्मोक. There is a tobacco chewing issue. If you are tobacco chewing, that is hidden and people don't discuss it. So वो भी important है. Tobacco chewing is as bad, or I wouldn't say more. I mean passive smoking का risk नहीं है उसमें, लेकिन actively you are taking it. So pregnant women, no to tobacco, that is no must, and very strong no to husband smoking in front of you. Absolutely. In fact, discourage him from smoking because उसकी भी लाइफ का भी तो सब बर्बादी होने वाला है आगे चल के. But more important, if you can't do it, then drive him away. He cannot come near you because the passive smoking risk is as bad or even worse for you as well as for the child. And not it doesn't the buck doesn't stop at asthma, it continues and it goes to so many other diseases. Cancer से लेके यस। कितनी सारी रिस्क मर जाती है. So nobody can say कि 6000 पॉइजनस प्रोडक्ट्स जिसमें है, टार है, बेंजीन है, गटर का टॉयलेट क्लीनिंग मटेरियल है, वहां से लेके इतनी सारी गंदगी जिसमें है, और 240 कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट जिसमें है, ऐसी कोई चीज मेरे बच्चे के आसपास भी आए ये सवाल ही नहीं आता है. सो आई थिंक ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम माई साइड. आई एम एंटी स्मोकिंग एक्टिविस्ट. आई एम एंटी टोबैको एक्टिविस्ट, and we keep doing this all the time. So I think this is very important message. ये अगर आप टेक होम समझिए मेरे से कि ये करना बिल्कुल मत करने देना, हस्बैंड को बिल्कुल ना करे, उसको बाहर निकाल दो घर से. एंड आई एम श्योर योर बहुत अच्छा। in-laws will be on your side at that time definitely. यस यस, बिल्कुल आपने बहुत सही बताया। थैंक यू डॉक्टर नितिन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कुड यू शो अस द सर्टिफिकेट प्लीज? What do you want? Acha, okay. Oh, lovely. The certificate, this is just a token of appreciation, although Oh, जो lovely. आपने आज हमारे सुनने वालों को बताया, व्यूअर्स को बताया, nothing can replace that pearls of wisdom. Thank you Dr. Nitin again for joining us today. That will be all for today. Dr. KK Med Talks will return tomorrow at 7 p.m. with another edition of the show. Keep watching Dr. KK Med Talks. Namaskar. Thank you, madam, and thank you everybody. Thank you.